गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स। लास्ट क्लास रे हमें देखिथिले फंडामेंटल्स रो किछि कांसेप्ट। काली क्लास रे आज हमें किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा। तो चलंतु किछि एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा फंडामेंटल्स टॉपिक रो। जो माने चैनल को जे सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1 जो माने भी प्रेजेंट अच्छा लाइव क्लास अटेंड करछो और परे भी अटेंड करिवो लाइव चैट बॉक्स रे देखला टाइम रे तमे लाइव चैट बॉक्स रे तमर क्वेश्चन नंबर विथ ऑप्शन मेंशन करो सो दैट तुम जानि परियो तमे केतेटा क्वेश्चन ठीक आंसर देजो। Question number 1. Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to resistance, voltage, power, and capacitance. The correct answer is voltage. আমি জানিছে current directly proportional to voltage in Ohm's law. That means যদি voltage বঢ়ুচি তাহলে current বঢ়িব। voltage যদি বঢ়িব 2 times তাহলে current বঢ়িব 2 times. Clear? Next. Question number 2. If the resistance of a conductor is doubled while keeping the voltage constant, the current will increase, decrease, remain the same, and becomes zero. Answer decrease. केमती decrease? जदि resistance of a conductor is double, जदि resistance double होउची, हमें current और resistance रो relations केमती जानूचे ना I equal to V upon R. जदि voltage constant, question में देची voltage constant. If voltage constant, then हम लिखि परिबा I proportional to 1 by R. That means ये proportionality constant को उठेले हमें voltage को multiply करिया पड़िबो। ओके तो जदि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल जदि रेजिस्टेंस तमर इंक्रीज करूची देन करंट विल डिक्रीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज एम्पियर वोल्ट ओम एंड फैराड। ये क्वेश्चन नो मैक्सिमम आंसर आसे जो मत लागुछ। द करेक्ट आंसर इज ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस रे यूनिट होची ओम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The ohm is the SI unit of electrical resistance defined as 1 volt per 1 ampere. 1 volt per ampere. Next. Question number 4. In a circuit, if voltage is 12 volt and resistance is 4 ohm, what is the current? 3 ampere, 4 ampere, 6 ampere and 8 ampere. चलो calculate करिवा. Answer होची 3 ampere केमती? Using Ohm's law, I equal to V upon R. I रो V रो value 12 volt, resistance रो value 4 ohm. 12 upon 4 and that is equal to 3 ampere. Option A is correct. Next. Question number 5. Resistance of a wire depends on option A length, option B cross sectional area, option C material and resistivity, and all of the above. The correct answer is all of the above. So the formula for resistance of a wire R equal to rho L upon A. R equal to rho L upon A. एटा ला formula. एथिरे resistance कहाँ पर depend करू देखो rho ऊपरे L ऊपरे A ऊपरे. Rho अछि resistivity, then L length of the conductor, A area of cross section. ये तीनटा जगह present अछि. So the correct answer becomes all of the above. Option D is correct. Next. Question number 6. If the length of a conductor is doubled, its resistance will option A increase 2 times, decrease 2 times, remain unchanged and become 0. If the length of a conductor is doubled, its resistance will increase 2 times. The correct answer is option A, increase 2 times. How? देखो, according to law of resistance, resistance is directly proportional to the length of the wire or conductor. If length will increase 2 times, then resistance will increase 2 times. Clear? Next. Question number 7. What happens to the resistance if the temperature of a conductor increases?
जदि गोटे कंडक्टर टेम्परेचर जदि गोटे what happens to the resistance ର କଣ ହବ if the temperature of a conductor increases ଯଦି temperature ଗୋଟେ conductor ର temperature increase କରୁଛି ତାହେଲେ resistance ର effect କଣ ହବ increase କରିବ decrease କରିବ remain same becomes zero answer increases option A correct increases କାହିଁକି in most conductor resistance increases with temperature due to increased atomic collision ଆଉ ଗୋଟେ reason ଅଛି ଦେଖ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ conductor ମାନେ ଗୋଟେ metal conductor or metal ହେଲା positive temperature coefficient positive temperature coefficient positive temperature coefficient ରେ କଣ ହୁଏ resistance directly proportional to temperature that means if temperature will increase or varies if temperature will increase then the resistance will also increase negative temperature coefficient ରେ କଣ ହୁଏ ତାର opposite ଟା এটা positive ଗଲା okay for negative temperature coefficient are inversely proportional to T temperature. If temperature will increase, then the resistance will decrease. Clear? Next. Question number 8. Which material has the least resistance? Copper, nichrome, iron and tungsten. तो देखो कपर निक्रोम आयरन टंगस्टन एथरो आमे देखुचे कपर वायर आमे रेगुलर बेसिस रे यूज करछे निक्रोम वायर भी यूज करा जाउची बाकी कपर वायर यूज करा जाउची इलेक्ट्रिसिटी रा कंडक्शन पई आ निक्रोम वायर यूज करा जाउची हीटर रे तो आमे जानि परछे निक्रोम रो रेजिस्टिविटी अधिका और कनेक्टिविटी कम आयरन टंगस्टन एमाने कंडक्शन भाव यूज करा जाउनी टंगस्टन हमर यूज करा जाउची हीटिंग एलिमेंट भाव रे सो यार रेजिस्टिविटी अधिका रहउची ताले हमर करेक्ट आंसर होउची ऑप्शन ए कपर तो देखो कपर हैज लो रेजिस्टिविटी एंड जो वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग माने तमे वायरिंग किछि भी फैन लाइट ए सब कनेक्शन पय लगे परियो यूज कर परियो नेक्स्ट Question number 9. In a series circuit, the total resistance is equal to the sum of individual resistance, the reciprocal of all resistances, the product of all resistances, and zero. Series circuit केमती ना एटा ला series circuit. याकू कहबे हमें series circuit. तो series circuit रे जति भी resistance लगे थे suppose R1 and this is R2 and this is R3 then all the resistances will be added. The R total becomes R1 plus R2 and R3. The correct answer becomes option A, the sum of individual resistances. RT equal to R1 plus R2 plus R3. Next. Question number 10. In a series circuit, which quantity remains the same across all components? Voltage, current, resistance and power. तो देखो answer होची current and explanation में current remains the same throughout a series circuit. How? देखो এটা ଗୋଟେ simple series circuit. A simple series circuit रे अछि एट voltage रो terminal volt तार sign अछि plus minus एट resistance R1 एट लागिछि resistance R2 एट current flow करछि I तो देखो गोटे ही current को flow करिया पई गोटे ही पाथ अछि current को पास करिया पई गोटे ही पाथ अछि एटी गोटे ही पाथ अछि ए गोटे पाथ रे गोटे ही current flow करिवो ना ना अधिक current flow करिवो सेति पई current remains same through resistance R1 and also through resistance R2. So the correct answer becomes option B.
Question number 11. Three resistors of 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in series. What is the total resistance? 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm. देखो सीरीज कनेक्शन में कौन हुए सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस ऐड हो जाए तो तीनटा को ऐड कर दियो आंसर पे जीवो आंसर 30 ohm R total equal to 5 ohm plus 10 ohm plus 15 ohm and plus equal to 30 ohm. The correct answer is 30 ohm. Option D is correct. Question number 12. If one resistor in a series circuit is removed, the circuit will option A continue to work normally, stop functioning, increase the current flow, and decrease the current flow. The correct answer is stop functioning. A break in a series circuit stops current flow entirely. केमती चलो हम देखिवा देखो ये है गोटे सिंपल सीरीज सर्किट ए सीरीज सर्किट रे मु तीनटा रेजिस्टर नेछि R1 R2 and R3 सपोज R2 डिस्कनेक्ट हे गला R2 तमरो डिस्कनेक्ट हे गला माने जळी गला माने तार ओवरहीट हे कि से खराब हे गला तो ये हे गला डिफेक्टिव R2 डिफेक्ट हे गला डिफेक्ट दैट मींस যদি next diagram ଆମେ କରିବା next diagram रे the circuit will look like circuit ଦେଖାଯିବ କେମିତି ଏମିତି ତ ଏଠି ଓପନ ହେଇଗଲା କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲୋ କରିପାରିବ କି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ପାଥ ଦରକାର ତ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ପସିବୁଲ କି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ so the circuit will stop functioning option B is correct clear next question number 13 in a parallel circuit the total resistance is always option A greater than the smallest resistance equal to the sum of all resistances smaller than the smallest resistance and equal to the largest resistance answer smaller than the smallest resistance option C is correct केमती in a parallel the total resistance is always smaller than the smallest resistance गोटे एग्जांपल नवा एग्जांपल रे देखो मु दुईटा रेजिस्टर नउची गोटे वोल्टेज सोर्स दुईटा रेजिस्टर R1 R2 नवानी बहुत नेगलानी R1 R2 एबे तार किछि वैल्यू नवा सपोज 5 ohm and 5 ohm तो टोटल रेजिस्टेंस केते होबो R total equal to 5 into 5 divided by 5 plus 5 and that is equal to 5 by 10 and RT becomes 2.5 तो देखो तुम टोटल रेजिस्टेंस केते पाइलो 2.5 ohm पचास कोन इन ए पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज टोटल रेजिस्टेंस तुम नॉर्मल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तुम 5 ohm अछि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू कम अछि ना अधिक अछि कम अछि ना सो द करेक्ट आंसर इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट ये डायग्राम टा आसी जाउछ एठी ओके मोटा बुझी तो पारलो माने प्रोसेस टा मु लिभे दोछि ओके एटला फार्मूला टा नेक्स्ट की पॉइंट्स अबाउट पैरेलल रेजिस्टेंस key points count the total resistance is always less than the smallest individual resistance clear the voltage across each resistor remains the same the voltage across each resistor remains the same in parallel circuit next
The total current divides among the resistors according to their resistance values. Okay, next. Question number 14. In a parallel circuit, which quantity remains the same across all components? Parallel circuit रे को quantity same रहुची, को quantity same रहुची, remain same across all component. सब components है, सब component रे. The correct answer is voltage. आमे पढ़ला टाइम रे भी देखिथिले. दुईटा रेजिस्टेंस की पांचटा रेजिस्टेंस जति टाइप रेजिस्टेंस लागू वोल्टेज जदि माने हमर सर्किट पैरेलल अछि वोल्टेज अक्रॉस R1 वोल्टेज अक्रॉस R2 and वोल्टेज अक्रॉस R3 remain same. Voltage is same across all the branches. Option क्वेश्चन ठीक है. Option A is correct. Question number 15. If two resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel, the equivalent resistance is dash. केता हो equivalent resistance? Answer 2.4 ohm. देखो equivalent resistance ର formula ହେଲା R equivalent equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. If two resistance are connected, जब दीटा resistance connect अछि then total resistance हे जिवो और total resistance ର formula तमे एटा को apply कर परिबो. Next. 4 into 6 upon 4 plus 6 that is equal to 2.4 ohm. Answer option A is correct. Question number 16. In a parallel circuit, if one branch is disconnected, the remaining branches will stop working, continue working, increase the current flow and decrease the current flow. तो चलो देखिबा. The correct answer is continue working. Explanation हला in parallel circuit each branch is independent. How independent? चलो देखिबा. गोटे लाइट लगला, दुईटा लाइट लगला, तीनटा लाइट लगला. parallel लगे तीनटा लाइट एटी अप्लाई करछु वोल्टेज सोर्स हला. जदि एटी पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज रो ये नेगेटिव टर्मिनल. देखो जदि मझी लाइट टा डिफेक्ट हे गला हला, मझी लाइट टा डिफेक्ट हे गला आ जळला नै. ऊपर लाइट टा जळुची, तळ लाइट टा भी जळुची. ओके मझी लाइट टा डिफेक्ट हे गला जळला नै. तो एटा लुकिंग लाइक ए मझी सर्किट टा मझी ब्रांच टा ओपन सर्किट वाला बिहेव करबा ना नै. ओके बिहेव करबो तो ताको मु रिमूव कर दोची. मझी ब्रांच टा को मु रिमूव कर दोची. ओके तबे देखो ए दीटा ऊपर किसी इफेक्ट ए दीटा माने दीटा को लैंप जो लगी से दीटा लैंप कोन फंक्शन करिया बंद कर दबो कि बंद करिवोनी काना याको सफिशिएंट वोल्टेज मिलुची याको सफिशिएंट पोटेंशियल मिलुची बल्ब को जळिया पई. ठीक अछि कंटिन्यू वर्किंग हबो. नेक्स्ट. Question number 17. Kirchhoff's current law KCL states that the algebraic sum of currents at a junction is dash. The correct answer is 0. आमे पढ़ीचे KCL कोन KCL हला Kirchhoff's current law. KCL Kirchhoff's current law sum of a current is equal to 0. को जगह रे द algebraic sum of a current is equal to 0 at node or junction at any moment of time. At any moment of time. जे कौन से टाइम रो तमे जे कौन से टाइम तमे मेंशन कर 0 टाइम नियो 5 सेकंड 10 सेकंड जे कौन से टाइम रे तमे नियो 10 am 5 pm जे कौन टाइम रे भी तमे नियो सबु बेले तुमको समेशन ऑफ अ करंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट इज 0 ही आसीबो हला. द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट. Question number 18. KCL is based on which fundamental principle? Conservation of energy, conservation of charge, conservation of momentum, and conservation of voltage. The correct answer is conservation of a charge. KCL is based on conservation of charge. The correct answer is option B. How?
A node or junction is simply a connection point in a circuit. Correct? If a charge accumulated at a node, it would act as a battery or capacitor. जदि सेई node रे or point रे charge accumulate होउची, suppose एटा गोटे node, गोटे circuit draw करूची. Suppose एटा गोटे node, एटा गोटे node, suppose node A. जदि node A रे charge accumulate होउची, माने charge किछि रहुची, present होउची, ताले हमें ताको कोन कहबा? जदि charge accumulate होउची, माने present हो रहुची, store होउची, ताले हमें ताको कहबा गोटे battery or capacitor. It will behave like a battery or capacitor, which which is not case in normal resistive circuit. हला जोटा कि हिंदी हुए नहीं. जेहेतु ए जगह रे चार्ज accumulate होउनी, तो सेति पई हमें ता कहूचे जेतिकी इनकमिंग आसुची ए नोड को जेतिकी इनकमिंग आसुची सेतिकी आउटगोइंग जाउची ए नोड रे एग्जैक्ट किछि भी रहुनी, सेति पई हमें ताको कहूचे कंजर्वेशन ऑफ, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Since no extra charge is created or lost, since no extra charge is created or what a minute, created or lost, the total charge flowing in must equal the charge flowing out. So conservation of charge. Next, question number 19. Kirchhoff's voltage law states that the sum of all voltages around a closed loop is dash 0, infinite, equal to the total resistance and equal to the total power. The correct answer is 0. Summation of voltage V equal to 0. Next, the correct answer becomes option A. This is the last question of today's session. In a closed circuit loop, the sum of voltage drops across all elements is equal to the applied voltage, 0, the total of current, the power loss. Question बोल से पूछो, the closed circuit loop. In a closed circuit loop, the sum of voltage drops across all elements is equal to dash. चलो हम देखने नवा. The correct answer is applied, the applied voltage. And how? This is a circuit. तीनटा रेजिस्टर अछि जोथरे कि वोल्टेज ड्रॉप होउची V1, जोथरे वोल्टेज ड्रॉप होउची, एथरे वोल्टेज ड्रॉप होउची V1, एथरे V2, एथरे V3 हला. टोटल वोल्टेज होउची V. पछाची कोन सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट. सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप माने सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हला ओके, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होउची V1 plus V2 and plus V3, that is equal to V. V किए ना applied voltage. Applied voltage. Okay, the correct answer becomes option A. This is all about for the today session. Next session में हमें next topic हमरो अच्छी जहाँ अच्छी सेटा को next topic हमरो basic electrical जहाँ अच्छे हम ताको practice कर first concept पढ़िबा, ता सहित question भी किछु माने include करिबा, so that interesting लागिबो. जो माने चैनल को जाय सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु. आगो को आउ किछि कोन मॉडिफिकेशन कले आउर भलो हबो सेटा कमेंट रे निश्चय जणांतु. आउ निज सांग मानको शेयर करंतु जो माने प्रिपेयर होउछंती ए रिलेटेड. जो माने पावर इलेक्ट्रिक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करंतु केना पीडीएफ आगो को पीडीएफ शेयर करा जिवो सेइतरे. आउ किछि कोर्स जहाँ भी जो माने ओपीटीसीएल जेएमटी ପାଇଁ प्रिपेयर होउछन ते मानको में रैपिड कोर्स अवेलेबल अछि विथ अफोर्डेबल प्राइस. जो मानकर प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली हे परने से मानको ପାଇଁ 21 डेज हैबिट अछि, सो दैट से माने से हैबिट को प्रैक्टिस करिकि से मानकर डे टू डे लाइफ रे मेंटल एंड फिजिकल से माने improve हे परिबे, से मानकर एनहांसमेंट हे परिबो, फिजिकली एंड मेंटली ग्रोथ हे परिबो, सो दैट से मानकर प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करि परिबे. आउ तो डेरी कहेंगे डाउनलोड पावर इलेक्ट्रिक्स ऐप. थैंक यू.